తీసేసి తిప్పుతున్నాను కూడా అమ్మా, తీసేసి తిప్పుతున్నాను కూడా. వేడిగా ఉంటుంది, అది తీసేసుకో. ఎక్కడ కూర్చుంటావు? నేను సోఫా మీద కూర్చుంటానులే అమ్మా. ఇదిగో దోశ రెడీ, తీసుకెళ్ళి. దోశ రెడీ, తీసుకెళ్ళిపో. ఇంకో దోశ వేస్తుంది. విన్నావా? విన్నా. ఒక్క నిమిషం, ఇక్కడ ఎంత వేడిగా ఉన్నది. కూర తీసుకెళ్లి సోఫా మీద పెట్టాలి కదా, కూర కూడా అంతే వేడిగా ఉన్నది. తిని ఆగే మళ్ళీ డిన్నర్ కూడా ఆకలేస్తుంది అంటే తెలియదమ్మా నాకు ఎలాగా. तो फिर आज आपका सबसे सामना आपको भी थोड़ा चाहिए फिलहाल आप चाहिए सो राइट नाउ प्लीज गो. को लेकर परेशान है ना? अब जायज है, लड़की है तो परेशानी तो होगी, लेकिन आपकी लड़की जिस लड़के के साथ है उसे तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उस पर विश्वास तो है ना? अपनी बेटी से गुजारा तो बस फिर दोनों आ जाएंगे जल्दी और सही सलाह. तो पूछा नहीं तूने उससे कि जहाँ आ रहा है वो? यही तो तेरी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ना तो तू किसी पर कंट्रोल कर सकती है, चाहे वो तेरे बच्चे हो चाहे वो तेरा पति हो. इसी लापरवाही की वजह से तेरा तलाक खाने से बाहर ही होता है. तो बड़ा सा मत तू है बेटी को बिगाड़े मल्ली सर्द को आ रहा है उसकी जिद के वाले माँ उसे राक्षस बनाए माँ, लेकिन उम्मीद बहू से करे मतलब बहुत साफ होना जिसका जब भी कोई लड़की शादी करके अपने ससुराल आती तो उसे उस घर के माहौल के बारे में कुछ नहीं पता होता.
माहौल को समझने की कोशिश करती है। कगमा भी साथ ये मासूम नहीं होंगी क्योंकि वो किसी नहीं होगी। दीदी माँ, आपको तो पता है आपका बेटा कैसा है, वो कितना सरफिरा है। फिर आपने इनकी क्या मदद की? क्या आपने इन्हें कभी सिखाया, समझाया कि इन कैलाश भाई साहब को कैसे काबू में रखें? And you died. मैं यहाँ आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। अपने हृदय में यहाँ होना सही। तो आज मन और मन बात करते हैं, नहीं तो मैं बोलिए तैयार है? मेरे पास आपके लिए प्रपोजल है। मतलब राज जी वापस आपको समाज का सरपंच चुनाने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरा प्रपोजल, अब मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो काफी इन्वेस्टर्स मुझसे खुश हैं और मेरे एक इशारे पर आप केटरिंग के बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं जानता हूँ सर आपको हाँ ना सोचने की वक्त है, आपको आज रात तक का वक्त दिया। आज शाम स्टाफ क्लास पर है, हम क्या लोग I can put that down later. That's a double. Yes, Baba. ये बता क्या बात है? That's a double. जिसने से क्या आया है इस घर में? मजा आ रहा है मैंने इसको चीज की कमी होने दी है। जो इसमें था सब मिला इसे। दुनिया जा रही हो और बनना नहीं बनता। चलो मानते हो कि मेरा बेटा कैलाश बड़ा गुस्सैल है, बैठा हुआ है। हाँ, तो क्या हुआ? अरे ये भी है उसकी। अरे ये बात क्या करो? और कभी गुस्सा ना बता। Text. मैं दिखाती हूँ ना आपको कितना मजा आएगा। बस सोचा That's why I'm not. The text was read at the start. Die for a second. Die for a second. Please. I got a joke. बोलो क्या कहना चाहते हो? मैं जानता हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं और आप विवेका की शादी मुझसे क्यों नहीं करवाना चाहते? आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरा खोया हुआ खानदान। आपकी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैं बड़ा बदतमीज, बेशरम, नालायक, आवारा किस्म का था जिसे समाज के खोबे नियमों की कोई परवाह नहीं। Go back. माफी चाहता हूँ लेकिन ये सब करने वाला नहीं। Welcome to heaven. Welcome to heaven. Heaven. जानता हूँ उस तेल की कम में सुनेगी गति होती है। तो बुलाया किसने? Dead. Dead. हाँ बुला के फिर आए नहीं। अगर आपकी बेइज्जती करनी होगी तो मैं आपको अकेले में क्यों बुलाता? सबके सामने बेइज्जत करता। मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ सच्चाई बताने के लिए बुलाया है और सच्चाई ये है कि आप मेरी और विवेका की शादी नहीं कराना चाहते। विवेका को लगता है कि
आप उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। Now you did. लेकिन सच्चाई ये है कि आप सिर्फ खुद से प्यार करते हैं। I did. आपकी कोई चीज हो, आपका घमंड, इसके ऊपर आप किसी चीज से प्यार नहीं करते हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि वेदा को अगवा करवाने में अंकित का हाथ था, लेकिन उस हाथ के पीछे आपका दिमाग। Anger. आप सब बोलने में इतना परहेज नहीं, Command. लेकिन आज यहाँ पर हमारे आस पास कोई नहीं, आप सच बोल दीजिए। हमारी बकवास होने से मैं हट गया और बताना हमको। मैं जानता हूँ फ्यूचर में किसी भी हद तक जा सकती हूँ, लेकिन मुझे और विदा को कभी भी एक नहीं होंगे। क्यों? सही सोच रहा हूँ ना मैं? वो तुम्हारी बकवास सुनने का कोई स्टॉप नहीं। सर, मैंने आपको यहाँ पर बकवास करने के हिंदी की बात करने के लिए बुलाया है। आप हिंदी की बात कर सकते हैं। मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है। You dead. मथुरा दास जी को जानते हैं आप? Dead. वही मथुरा दास जी जो आपके समाज के सबसे बुजुर्ग और सबसे सम्मानित सदस्य हैं। मैंने अपने कांटेक्ट से उन्हें कांटेक्ट किया। मथुरा दास जी वापस आपको समाज का सरपंच चुनाने के लिए तैयार हो गए। हाँ, उनका रेट कार्ड काफी आया था, लेकिन वो मैंने पैसों का इंतजाम करके सेटल कर दिया। क्या वो सब बातें बाद में। तो बेसिकली आपको आपका खोया हुआ तख्त वापस मिल जाएगा, जिससे आपका अभिमान का सर और ऊपर हो जाएगा। यही चाहते थे ना? बढ़िया है। दूसरा प्रपोजल, आप चिंटू के बाप की मदद से धंधे को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो तो हुआ नहीं मेरी वजह से। खैर, उसका भी एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है। अब मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो काफी इन्वेस्टर्स मुझसे खुश हैं और मेरे एक इशारे पर आप केटरिंग बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं और आपको एक नया रेस्टोरेंट भी खोल के देंगे। Right after you jump. तो आपकी ये जो Right after you जोड़ी है, jump, वो हमेशा पैसों से भरी रहेगी। you land बढ़िया है। in the void. अब तीसरी और सबसे जरूरी बात, Let's just build this. मैं जानता हूँ कि आप मेरी और विदा की शादी तो कभी कराएंगे नहीं, क्योंकि मैं एक दूध वाला हूँ। Shall उसके लिए एक we? उपाय है मेरे पास। मैं विदा से शादी कर लूंगा और उसको हमेशा हमेशा के लिए अजमेर शहर से बाहर लेकर सेटल हो जाऊंगा। आप चाहे तो अपने समाज वालों को ये बोल सकते हैं कि मैंने विदा हमेशा के लिए घूमा, जिससे आपकी समाज में और नाम और अभिमान मिल जाए। और अगर आप ये नहीं बोलना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि विदा की शादी आपने किसी बड़े गरीब खानदान में करा दी, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन को, और असल में एक्सीडेंट में मारा। आपको जो भी कहना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ मैं इतना चाहता हूँ कि विदा मेरी हो जाए और इससे आपके अहंकार, आपकी ईगो की भी हिफाजत हो जाएगी। लेकिन आपको पहले दो फायदों के लिए आखिरी शर्त माननी पड़ेगी।
देखिए पैकेज डील है। बोलिए क्या कहता है आपका दिमाग? तो तुम चाहते हो मैं एक ऐसे आदमी को जिसे मैं नाकारा और नालायक मानता हूँ, जिसे मैं अपने बगल में बैठने की इजाजत दे नहीं सकता, ऐसे आदमी को आंख बंद करके मैं अपनी बेटी सौंपूं। सिर्फ मेरी पोजीशन, मेरा पावर और मेरा पैसा वापस हो जाएगा। जी हाँ, यही चाहता हूँ मैं। और ये बात आप खुशी खुशी करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है सर। ये राज हमेशा राज रहेगा आपके और मेरे बीच। इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ अकेले में बुलाया है। रविंदर को कभी भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा। सोच लीजिए सर, प्रपोजल बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ इस वक्त आपका दिमाग बहुत तेज चल रहा है। प्रपोजल आपके हक में है सर और बहुत अच्छा है। आप प्रॉब्लम यही है कि आप मुझसे बहुत नफरत करते हैं। लेकिन सोच लीजिए प्रपोजल कमाल का है। मैं जानता हूं सर आपको हाँ ना सोचने के लिए नहीं, प्रपोजल पचाने के लिए वक्त चाहिए। चलिए आपको आज रात तक का वक्त दिया। सोच के बता दीजिए। अथर्व, ये क्या किया तुमने? तुमने इतना बड़ा प्रपोजल कैसे दिया पापा को? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये सब पीठ पीछे कब किया तुमने? जिस समाज के ठेकेदारों के साथ तुम्हारे लिए भिड़ गए तो तुमने उन्हीं के साथ सौदा कर लिया? हाँ, कड़वा सच बताने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ा मुझे। लेकिन इसलिए मैं आज आपको सॉरी नहीं बोलूंगा। कैसा सच अथर्व? मैं तुमको कितने बार बता चुकी हूँ कि मेरे पापा को पैसे, पावर, ईगो का कोई घमंड नहीं है। कड़वा सच बचाने के लिए हाजमा बहुत मजबूत होना चाहिए विला जी। और आज आपके हाजमे का इम्तिहान है। बस सिर्फ रात का इंतजार कीजिए, आपको आपके पापा का असली चेहरा नजर आएगा। अभी जो आपने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। आपने गौर नहीं फरमाया, मेरा प्रपोजल सुन के आपके पापा इतने एक्साइटेड थे कि वो ये पूछने ही भूल गए कि विविधा सारी रात कहाँ थी और कैसी थी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पापा तुम्हारी टेस्ट बहुत आसानी से पास कर देखना तुम। क्या कही आपने? इसकी क्या गारंटी है जो तुम कह रहे हो? करोगे? ये समाज कमेटी का अप्रूवल है। कैलाश कश्यप को सरपंच की उपाधि दे दी जाए। मेरी तरफ से तैयारी पूरी, अब सिर्फ आपकी हाथों में है।
सितंबर से रात 9 बजे इसका प्लस एच पर पुलिस वाले तेरा एनकाउंटर करने की कोशिश क्यों करेंगे? गलत लड़की को उठा लाने वाले बंबू कर दिया इनके 5 ओवर Stop doing your best. They are going to vote us out. I hope they do. What, since we're being honest here, what is it that makes me creepy? Okay, you can tell me. You following me right now? How's that? Okay, that's not an answer. Like, does it make me creepy that I notice that you get up every time Alex leaves the room, or that you go on long runs in the woods by yourself, or that you somehow skipping on this campus like a bad. You really want to know what's creepy? Yes, I do. You want to know? Every time you talk. Every time you smile, I can see the little wheels spinning in your head. Every gesture, every laugh, every move that you make, it's like a calculation, it's a performance. You're not just a creep, you're a freak. Should one do that? You want to call your imaginary friends green-faced up, yeah? Enough! This is what Miranda wanted, alright? For us to turn on each other, which is exactly why we shouldn't. But if we don't both, she'll cut 10. Let her! But if we turn on one of our own, we'll never be able to live with each other. Or with ourselves. 10 from her is better than 3 from us. Where's Simon? Come in. May I help you? We've been turning upstairs. We decided not to cooperate with your exercise. That's unfortunate. I'll have to cut 10. No, you won't. Life's full of hard choices. This wasn't one of them. Looking out for yourself? No. It's for the greater good. Found anything yet? Still looking. It's been almost an hour since. We're talking about a military supply database. You can't just click search. Maybe if you stop covering. Sorry. You gave me a choice. Sir, we just got report of an intruder matching Parrish's description of the technology park for dogs. Security ID off the CCTV and passed up the chain. We have footage? Get the local police up there now, get the footage to me. We have her. I know how this looks. Guess I'm still there. Look, I can't get away with helping you unless I can prove that it was under duress. I need to do everything in my power to make it look like I have the authorities. You're getting me arrested again. I'm gonna get you out of here before that happens. Why should I trust you? Because I'm good at this. You baby. I'm not really doing it. I'm sticking together. For now, one defection won't even matter. You take care of everyone else. You never let anyone take care of you. You've been distracted. And not just by this, I can tell. It's nothing I'm gonna talk about. Hey, buddy. Where you been? Just went for a walk.
After curfew? What do you care? Oh, right, I forgot. I intrigue you. I'm sorry I can't say the same. Wait, Simon. Did you vote? Yeah. And so should everybody else. Why would you do that? Because every single person here works so hard to get in. Now, if it's a choice between losing 3 of you or 10 of you, that's no choice at all. I thought I knew you. Nobody knows anybody else. Ever. You guys, we can't do this. We have to stick together. We have to be unified. Everybody should go to Miranda's office and vote. That's the only fair way. Isn't it time to end this? So we can get back to doing what we are here to do. It's training to be agents. Someone's saying that. Sounds good to me. Come on. Come here. Come here. They caved. People are going to vote. Maybe you'll get lucky and you won't have to carry me on your back anymore. I might as well put down our name myself. We should have never come here. Right. Or maybe we should have stayed home in our boring, safe, traditional lives, just like all the women in our family where you never get to regret anything because there's nothing better than what you already have. I want more, and you should too, especially since you're so good. I can learn to run faster or fight better, but you can never learn to be your own person. If you leave now, the only thing you will ever be is someone's daughter, sister, or wife. Alright? As hard as it is for you here, you still want to stay. Okay, but if I have to match you, you have to match me. Are you going to vote? I may not like what anyone said about me, but I like myself. And if I voted, I wouldn't. Where are you headed? To vote. That won't be necessary. You know, I have to say, we run this exercise on every class in NATS, and it always turns out a little different, but no class has decided actually to vote. Did any of you think that the whole point of this was to test your count? There will be no cut, but there will be a price. Asher, you just earned a formal reprimand that puts you on supervisory probation. Your next mistake, your selection termination from your training at Quantico without review. For what? Doing what you told us to do? For turning on your people when they needed you the most. I need to go to the bathroom. Yes, now. All this time, I still don't know who the real side passion is. Nobody's ever just want to play. Now look, when they get here, they're going to have a lot of questions, and I'm going to have to be able to answer them. But I'll make it look good for the cameras. I'm with you, both are on you. I've done it for years. You can resist it. Why are you blocking the door? They want you to turn on Alex. Who is she to it? I know her. And if you turn on her now, you turn on your blood, you'll never forgive yourself. How are you so sure? I know. You're that agent who's so spiritual. Your daughter has the weight of the FBI pushing down on her. If she loses you, what will she have left?
We good? Roommates. Kinda have to be, right? I apologize, but Deep down, you can't feel it. Maybe I am creepy. And maybe you're a drunk. just because you follow orders doesn't make you a drunk. You have no idea what it's like over there. What it does to you. I know more than you know. Yeah? Why's that? Because you're handing out blankets on the Gaza Strip, you saw a murder or two. It's because I saw what people are really capable of. I refuse to go to bed on weak old sheets. And I refuse to go to bed angry. Compulsive on both hands. For the record, in my profile, I listed plenty of restraints. You weren't wrong about my weaknesses either, Shelby. You're right, I do try and control everything. I just figure that if I know what's happening, I won't be passive. Like that file on your back. My father was an FBI agent. I've always wanted to know so much about him, but now that I have it, You're afraid you might find out something you don't know. Well, you might not know this, but my dad died on 9/11. I may have heard a rumor. Yeah. And you know what? If I can exploit that right now to help you, I will. You see, my dad always wanted me to be his little country girl, and my mom wanted me to be her little pageant queen, and boy was I ever. But I spent all my time trying to make them both happy when they were alive. And when they died, I had to clean up the mess that I left. And let's just say that I learned a lot about them, but they probably hoped their little country pageant princess would never find out. I'm so sorry, Shelby. I'm not. Because while it might look like I joined the FBI with some avenging angel, I'm here for me. And you are here for you. Need to get done? First things first. Take off 10 minutes. I want you to watch something. More propaganda? No, not propaganda, not some misguided ambush in the bathroom. It's the truth. This video, taken just moments ago, shows the suspected Grand Central bomber, Alex Parrish, taking a hostage at gunpoint. The manhunt continues as authorities from several states are going all out to track down the suspect considered the most. After her father died, I sent Alex to India to live with my family. Didn't you stay there for 10 years? But we only knew where she was for 9 of them. She lied. You're gonna shoot me. You don't have it in you. No sabemos. The
You have the Metro X-Force, the world's first shadow-proof screen. In this case, what X? सही पे रूम होता है आसान जब रखते दिमाग में साथ में magicpix.com प्रॉपर्टी से मिलेगी Why compromise on being the perfect host? Enjoy Great Deals at the Pepper Fry Happy Holi sale. Get up to 50% off. Pepperfry.com. Happy furniture to you. Imagine you had this guy's attention and his bosses. Yeah, her. And his hot shots. Doesn't know that these guys, looking at you, will one day rule the world. What if the whole world would look to you when you step up and inspire? Johnny Walker, the journey. Keep walking. Cause baby, know we got bad love. Wild and natural. You said you were going to turn up the heat. I had my doubts, but I think I get it now. In order to make our agents stronger, we have to break them down and build them back up again. It's the only way. Thank you for keeping up appearances. Trainees think you're the bad cop now. They're afraid of you. Well, we're closer to each other. You should get some rest. I have an appointment. I'll be fine when you're looking. You know what? You're making me sad. Because I'm so much better than you. Because this is all you care about, this is all you have. When you're finished here, I have people to go home to. I have a family. What do you have? Someone's looking a bit woozy. Well, Elias and I got a roll plastered, so if I'm not looking directly at me, it's because there's like 20 of you. The only thing in my profile from you was nice. You could have said so many mean things. Well, there's too many to choose from. I could just pick one. Thank you. Guess you needed some air too, huh? Just one more flight talking. My father was a special agent. I'm not you. Neither did I. For most of my life. I just knew him as two men. The father that I loved, who made me feel safe. And the bitter drop that scared me so much that one night. All my life I told myself that the second man was the real one, and the other one was just a lie or an act or a mask. I'm so What are you talking about? He was a hero, Ryan. He saved hundreds of lives. He was one of the most decorated agents in his 20 years in the Bureau. I wasn't even children. I killed a hero. The daughter I knew was a good person. But what she's done
cannot be forgiven. And the truth about her past should no longer be hidden. For too long, I ignored the red flags. You look better. Are you eating again? You're still not talking to me. No, we're not. You put me here. Clearly this isn't okay. No, they think it is. Which is why I'm gonna give it to her. Please don't mind. Maybe she felt trapped